एप्सन PLQ 20 या 30 कार्ट्रिज रिफिलिंग करने के लिए कोई भी स्क्रू ड्राइवर या एक्सेसरीज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको रिबन फ्लिप लेना पड़ेगा जो मार्केट पे 20 रुपीज़ से लेकर 30 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। शुरू करते हैं रिफिलिंग करना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लॉक होता है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है, तो इस लॉक को हम लोगों को खोलना पड़ेगा। देखिए कार्ट्रिज का ऊपर का कवर ओपन करने के बाद अंदर में आपको रिबन का रोल मिलेगा, जिसको अभी रिमूव कर नया लगाएंगे। तो अभी क्या हुआ है, इसका इंक ख़त्म हो गया है। इस रिबन फिल्म पे ही इंक रहता है, जो प्रिंट होने के बाद कम हो जाने के वजह से लाइट प्रिंटिंग होता है। और देखिए यहाँ पर मिडिल पे वाइट हो गया है, मतलब इसका इंक ख़त्म हो गया है। अभी हम इसको रिमूव करेंगे।
हार्टी रिबन कार्ट्रिज को कैसे रिफिलिंग करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हम लोगों को बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए।